the second lecture of this unregulated power supply. I will just share my screen. Hold it for a second. Yes. So we were working on this. We have done this in the last class. We have started with this. So I just brush it up to the last lecture of yesterday. So we are working on series pass voltage regulator, which I need to continue today also. I will just refresh it. So we have done this. We have understood what is transistor as a switch, and then this is when the transistor is on and the output voltage is low. So this was there, and how the transistor works in these two regions, saturation and cutoff. These were two regulators, series type regulator and a shunt type regulator. We have worked it on it. So in your syllabus, you are having only series regulators, and the shunt regulator is not having in your syllabus. So this is just a block diagram of series uh, pass regulator circuit, in which you are able to see that the series transistor is connected over here in series, and the error amplifier gives you the error value, and accordingly that it controls the output DC voltage. Along with that, it is having some reference voltage which is given by the Zener diode and error detector and sample and adjust circuit, that is some potential divider network that we are having. So we have learned this. This is also we have completed. This is the actual circuit diagram of series pass feedback regulator circuit. We have completed this, and this was we have done yesterday, in which we have completed the uh, over protection load or current limiting circuit, in which if the current rises through this transistor, then this is controlled by this circuit. So I have put this all in YouTube also. So we have completed with this. Then we have started with this IC voltage regulator circuits, in which we are using the ICs. So there are two types of ICs, 78XX series and 79XX series, in which 78 stands for the positive voltage and XX stands for the voltage that is to be taken out of this regulated IC. If it is 7832, which implies that it is a positive IC, and it will give you the output voltage of 32 volts, right? So this is accordingly ICs are being differentiated. The second one was the 79 series, 79XX series, which implies that 79 stands for the negative supply, and the rest of two XX denotes what output voltage is to become out of that IC. So 7912 means negative 12 volts. These ICs you have already used in the last year. And this is one of the another IC which we call it as LM317. Now this is IC where we can say we can adjust the voltage, right? So according to our requirement, we can change the output voltage, right? So that is called as the adjustable regulators, and the best example is LM317. 317. We will try to elaborate this in the next class. What is inside this 317 IC, right? So the circuit diagram looks like this. So if you are able to see, the first block is a rectifier and a filter circuit. So this is the actual unregulated power supply. We are applying this C1 for, say, again the filtering of that. So this is given, and we are expecting this at this point the unregulated supply should come. And this is the IC LM317, which has three terminals. So the first terminal is input, second one is the adjustable terminal, and the third one is the output. So this adjustable terminal is given to a potential divider network, if you are able to see R1 and R2, and accordingly the output voltage is being regulated or is being adjusted according to your requirement. So this voltage can be varied. So it is not a fixed type of regulator circuit, but it is adjustable regulator circuit. Whereas 78XX series and 79XX series, which I have already told you, are supposed to be uh, the fixed regulator circuits. Means we are having the fixed regulation over there. So they are over there. So some people are still waiting. Okay. So these are for those ICs where
we require that the voltage should vary according to our requirements. So we can vary those requirements by varying this R2. So if you say increase or decrease this R2, then the output voltage will increase or decrease. The last type of regulators are the switching regulators, which are called as SMPS. If you have heard this word SMPS, SMPS means switch mode regulated power supply. SMPS, switch mode regulating power supply. Right now, SMPS are basically and generally used in computers. If you are able, if you recall it, so UPS is one of there, and inside that, in the microprocessor, in the CPU itself, there is one block which takes care of all the पावर सप्लाई. सो एक ही डब्बा होता है एक अंदर जो पूरा का पूरा पावर सप्लाई के लिए डेडिकेटेड होता है. मतलब उसमें से सिर्फ आप अलग अलग प्रकार के पावर सप्लाई अलग अलग डिवाइसेस को लगा सकते हो. सो ये जो पार्ट है ये SMPS का पोर्शन. ये SMPS क्या होता है? स्विचिंग मोड रेगुलेटेड पावर सप्लाई. सॉरी सॉरी. So if you are sorry, so if you are able to see, this is the block level diagram of SMPS, switching mode regulated power supply, in which there is a transistor. Now this transistor Q1 is being used to work as a transistor, as a switch, and which is controlled by this oscillator. Now this oscillator generates square wave pulses. Remember this. This is going to generate the square wave pulses, and these are being gated. Gated means where we will be using a gate like AND gate or a gate. Likewise, so this gate is being controlled by this error amplifier and reference circuit, and this is the error detector. Again, we are having a potential divider network over there. So this is the block level diagram of SMPS that we have to study now. So switching mode power supply, right? So the power switch is constantly driven back and forth between saturation and cutoff. तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है Q1, इसको सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में हम लोग इसको ऑपरेट करके आउटपुट वोल्टेज जो है बहुत रेगुलेट करते हैं. मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर या हम लोग जो बोलते हैं अपना कंप्यूटर में जो ये कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होते हैं वो सबके सब सर्किट्स जो होते हैं दे ऑल आर टीटीएल लॉजिक्स. टीटीएल लॉजिक्स में ऐसा होता है कि 0.01 वोल्ट भी अगर राइज हो जाता है तो हमारी वो आईसी उड़ सकती है, वो पूरा का पूरा कार्ड उड़ सकता है. तो उसके लिए हमको एकदम एग्जैक्टली रेगुलेटेड वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, एंड देयर वी ट्राई टू यूज दिस SMPS, राइट. सो इसको कैसे ऑपरेट करना है? नाउ दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय this is the formula for that. So the average, that is V average voltage, output voltage, is equal to the input voltage, obviously, and which is controlled by the on time and off time of the clock pulses. So if you are able to see, this upper one are the on time and this lower one is the off time. Means at this time the transistor is on, and at this age the transistor is off. If I am not, my cursor is not visible, kindly let me know. So this upper portion where we are having the positive supply, so here we consider this as the on condition, and this, the time for this is called as the off time, right? So we are having both the times, T on and T off, where the clock pulse is a square wave. Upper side is called as on time and the lower side is called as off time. So the total will give you the total time period of one clock pulse, right? So this is on time. So that is included in this formula, that V average is equal to V in and is multiplied by T on by T on plus T off, matlab total time, right? So this is how it controls this voltage. Now how this circuit looks like. So the circuit which is shown over here in the diagram over here is like this. So if you are able to see, this is the power switch, that is a transistor over here, and
this is that gate that might be a AND gate, and which the one input of AND gate is connected to the oscillator. The other input is connected by this output of the op-amp. Now this op-amp is again working as a comparator circuit which you need to study in your paper 1. op-amps जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को op-amp के पूरे एप्लीकेशंस पढ़ने को मिलेंगे जो मैडम पढ़ा रहे हैं, राइट। तो उसमें जो op-amp यूज किया है, यहाँ पर जो सर्किट यूज की है ये op-amp का कंपैरेटर वाला सर्किट है। अब ये कंपैरेटर वाला सर्किट कैसे काम करता है इसका मैं बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये op-amp को हम लोगों ने ओपन लूप गेन में यूज किया है। ओपन लूप गेन बोला तो इसको हम लोगों ने फीडबैक नहीं दिया। अगर हम लोगों ने इसको फीडबैक नहीं दिया तो ओपन लूप गेन जो होता है op-amp का वो इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत सारा होता है। पर इनफाइनाइट वोल्टेज हम उसको दे ही नहीं रहे हैं पावर सप्लाई में। हम उसको कितना वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप प्लस वी दे रहे हैं और ये ग्राउंड दे रहे हैं। तो उसके पास क्या क्या रेंज है आउटपुट देने की, या तो प्लस वी देगा या तो फिर ग्राउंड देगा। तो ये रेंज में हम लोग ये कंपैरेटर को काम करवा रहे हैं, राइट। अगर हम लोगों ने यहाँ पे +12 और -12 यूज किया रहता तो ये या तो +12 स्विच करता या -12 स्विच करता, इसके बाहर नहीं जाता। इनफाइनाइट ओपन लूप गेन का मतलब ये होता है कि उसका गेन जो है वो मैक्सिमम है, राइट, यानी बहुत बड़ा है। तो अब हम बड़ा कितना होगा, जितना हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, जितना हम पावर सप्लाई उसको दे रहे हैं उतना सप्लाई उतना वो होगा, राइट। तो ये इसके लिए यहाँ पर एक कंपैरेटर दिया है। तो कंपैरेटर में क्या रहता है, जो ये जो दो इनपुट है, ये दो इनपुट, एक को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा वेरी होने वाला वोल्टेज है वो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं। एंड कंपेयरिंग दिस टू वोल्टेजेस, हमारे ये जो दो वोल्टेजेस है इसको कंपेयर करने के बाद इसका आउटपुट जो है या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा। क्योंकि इसको हम लोगों ने प्लस वी और ग्राउंड के बीच में दिया है तो ये भी वोल्टेज जो है ये या तो पॉजिटिव प्लस वी रहेगा या फिर ग्राउंड रहेगा, इसके बीच में स्विच करेगा। और उसको जो क्या कहते हैं उसको जो डिटरमाइन करने वाले दो चीजें हैं वो है ये एक रेफरेंस वोल्टेज जो कि आपके यहाँ लगा हुआ है रेफरेंस सर्किट के थ्रू, और दूसरा लगा है V2 जो आप लोगों ने पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू दिया है, राइट। तो ये एक कंपैरेटर का सर्किट है। कंपैरेटर का सर्किट हम लोग ओपन लूप गेन में यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर लगाया है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच जैसा यूज कर रहे हैं और इसको कंटिन्यूअसली स्क्वायर वेव पल्सेस दे रहे हैं। अगर हम इसको कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करेंगे, ये ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करेंगे तो इसका जो एमीटर से आने वाला करंट है ये भी कैसा रहेगा, ऑन ऑफ होते रहेगा। ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये ऑन ऑफ होगा, राइट। मतलब हमारे को फिर से वापस में हमारे को क्लॉक पल्सेस ही मिलेंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर के एमीटर में, राइट। अब दे आर नॉट अ रेगुलेटेड, दे आर नॉट अ प्योर डीसी, दे आर क्लॉक पल्सेस। तो अब ये क्लॉक पल्सेस को रेगुलेटेड फाइन डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फिल्टर और क्लिपर का सर्किट कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक डायोड लगाया है, एक इंडक्टर लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया है। हम इसको बोलते हैं एलसी फिल्टर, एलसी फिल्टर। और ये डायोड का लिए लगा है, डायोड लगा है क्लिपिंग करने के लिए, राइट। तो हमारा जो पॉजिटिव है उसको क्लिप करना है और हमारे को एक फाइन डीसी वोल्टेज की लाइन चाहिए, डीसी वोल्टेज का सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए ये सर्किट बनाया हुआ है। ये एक्चुअली क्या करता है, एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारा कैपेसिटर था पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कर रहा था, वैसा ही यहाँ पे ये क्लॉक पल्सेस को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला सर्किट यूज किया है। इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर एंड क्लिपर सर्किट, राइट। इतना समझ में आया। और लास्ट में R1 और R2 लगाया हुआ है। दीज आर अगेन अ पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज गोइंग टू डिवाइड द आउटपुट वोल्टेज। अगर बढ़ जाता है तो आउटपुट, ये जो पोटेंशियल डिवाइडर का आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा ये जो गेट है, गेट एंड गेट है, इसको ये हाई जाएगा या लो जाएगा। ये हाई या लो जाने की वजह से ये क्लॉक पल्सेस इधर जाएंगे। तो हमको कब रोकना है कब छोड़ना है, ये जो जिम्मेदारी है ये इस एरर एम्पलीफायर के सर्किट की है। आई होप
you have understood this circuit. I have not explained you the working of this circuit, right? अभी मैं आपको इसका working बताने वाला हूँ. ये इतना समझ में आया है क्या? Somebody, if you have understood, kindly chat on the chat box or kindly unmute yourself and reply. इतना समझ में आया है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं. स्विचिंग मोड पावर सप्लाई ये कहाँ यूज होता है? हम लोग इसको बोलते हैं SMPS. ये कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर के सीपीयू में एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक ही होता है ऊपर, जिसमें पूरा का पूरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, राइट? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, राइट? इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ बताया हुआ है. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट. और ये जो है, दिस इज एक्चुअल सर्किट ऑफ दैट SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई का ये सर्किट है. यहाँ पर ये एक पावर ट्रांजिस्टर है. पावर ट्रांजिस्टर याद रखिए, पावर ट्रांजिस्टर में क्या होता है? हाई वोल्टेज और हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, राइट? ये अपना सादा ट्रांजिस्टर यूज नहीं करते यहाँ पे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, स्विचिंग है फटाफट फटाफट फटाफट, तो वो बहुत जल्दी गर्म होने के चांसेस है. बंद चालू कर रहे हैं हम लोग उसको, एंड दैट टू एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. मतलब ये जो हम लोग यहाँ पर क्लॉक पल्सेस देने वाले हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी क्लॉक पल्सेस है. हाई फ्रीक्वेंसी बोला तो कितना रहेगा? अराउंड से 2 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज या 4 किलो हर्ट्ज, ये वाली फ्रीक्वेंसी पर, यानी एक सेकेंड में 4000 पल्सेस, एक सेकंड में 5000 पल्सेस, इस स्पीड से वो हम लोग देने वाले हैं, राइट? सो उसको स्विचिंग कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं. ये ऑन ऑफ करने के चक्कर करने के वजह से हमको यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आने वाला है, ये भी कैसे आएगा? स्क्वायर पल्सेस में आएगा. ऑन ऑफ, हाई लो आएगा. और ये हाई लो जो वोल्टेज है, दिस इज नॉट प्योर डीसी. इसको प्योर डीसी करने का काम जो करता है, दैट इज दिस फिल्टर एंड क्लिपर सर्किट. ये क्लिपर और फिल्टर का सर्किट उसको डीसी, प्योर डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है. ये इट इज एज गुड एज अ फिल्टर सर्किट, जो हम लोगों ने रेक्टिफायर के सर्किट के बाद एक छोटा सा कैपेसिटर लगाया था 1000 माइक्रोफैरेड का. वो कैपेसिटर काम करता है फिल्टरिंग का. वो क्या काम करता है? पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट the switching mode power supply. This is the construction of switching mode power supply. Now how it works? Okay, so we have again two conditions. या तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, या तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा. यही दो कंडीशंस हो सकती है. So initially in the first stage what we will say that let the output voltage is going to increase, and if it increases means this regulated DC voltage which is at the output side, if it increases, suppose the output voltage is, if we require it as a 12 volts, now it increases to 14 volts, right? We are using this potential divider network R1 and R2 over here. So this voltage R1 and R2, this is, if it is 12 volts, then it is going to divide into 6, right? So 6 volts will be say blocked at this R1, and 6 will be dropped across this. So it will have 6 volts, and we will keep this reference voltage at 6. So this will remain at high position, and if it is high, then continuous clock pulses will go to this and it will work, right? Now in the first situation when we are expecting that the output voltage is increased, जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया, आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया यानी 14 वोल्ट हो गया, 12 चाहिए था 14 हो गया. 14 हो गया तो क्या होगा? यहाँ का वोल्टेज जो है दैट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज टू 7 volts. इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 7 ड्रॉप एट R1 and 7 ड्रॉप एट R2. तो यहाँ 7 वोल्ट जैसे ही होता है, this becomes low, the output of the comparator goes low, and if it is goes low, then the pulses which are supposed to go from the gate will stop going, and as soon as it stops, the output voltage will decrease, and as soon as it decreases, the comparator will again send a high signal to the gate, and it will again start the pulses to the base of the transistor, right? So this is how the voltage is being regulated when we are having it at the, whenever it rises, the output voltage rises. Suppose the voltage lowers or voltage drops. If the voltage drops over here, then again the potential divider network will reduce the voltage. As soon as it is reduced, then it will become more positive, and as soon as it becomes more positive, more clock pulses will supposed to go inside the transistor,
and the clock pulses will be increasing. So as soon as the clock pulses increases, which implies that the voltage also increase, and it will keep the output voltage to a constant level. So it won't allow to increase much, right? I hope you have understood this SMPS switch mode power supply. And with this, we come to an end of this class. I will stop sharing this. And if you have any queries, you can you can chat on this chat box, or you can put it on the comments if I'm going to share it on the YouTube also. So I will stop sharing my PPT. Okay. So if you have any queries, you can let me know. किसी को कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. श्रावणी ने कहा है नो सर. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. गुड. आप लोग जब तक फीडबैक नहीं दोगे बेटा, तब तक कि हमारे को कुछ समझ में नहीं आने वाला. और मैंने आपको बताया है कि मैं हर दिन अपलोड कर रहा हूं आपके यूट्यूब ये वीडियोस. थैंक यू ऋषिकेश. आई एम अपलोडिंग दिस वीडियोस ऑन यूट्यूब. सो एंड मैं लिंक भी भेज रहा हूँ. आप लोग एक दो बार उसको चेक करो. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो काइंडली रेफर बैक टू मी. ठीक है. बाय नाउ मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑलरेडी लेट बाय 20 मिनट्स होपफुली. सो हम लोग अभी आज क्लास एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इसके आगे का पढ़ूंगा. LM317 का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम बाकी है, और हमारे रेगुलेटेड आईसी का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम बाकी है. हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे. Right? Shall we stop here if you don't have any queries? Yes, Shall sir. we? Thank you, Rishikesh. Chalo, good. So I will stop here now.